Hello everyone, welcome back in this wonderful session where today I'm going to teach you something about really essential topic that is punctuation. Basically, it plays a very crucial role when it comes to have a conversational tone whenever you're reading something. Now, without wasting any further time, let's get started. So basically, the very first thing is what exactly a punctuation is. So the fact is, punctuation marks are basically some kind of symbols that are used while writing to make sure that the intention or the intended meaning is being delivered to the reader specifically. Whenever you read a story, or whenever you read a newspaper, or whenever you read any kind of novel or any kind of news, you will be able to get the exact intention of what the writer will be having whenever he was writing that particular thing. How do you manage to get that? It is because of the punctuation. If punctuations are not going to be there in the particular sentences, in a particular newspaper or a novel or a storybook, the intention might be misunderstood. And because of that, the reader would not enjoy or would not be able to enjoy the intended meaning because that's where the entire fun lies. The fact that I'm trying to tell you over here that even though with respect to all the grammatical, parameters or you can say जितने भी topics है हमारे पास जितने ज़्यादा वो important है उतने ज़्यादा ही punctuations हमारे लिए बहुत ज़्यादा important है. Now let's understand how we are going to master the punctuation for the IELTS score. If you are a student who is watching this from the IELTS perspective. Why punctuation matter in IELTS? It impacts the coherence and cohesion in writing. When I talk about coherence is the kind of structuring that is being done. जैसे कि in your IELTS examination, you've got a reading module. In that module, you get multiple passage. And in that, you get numerous paragraphs. It's really very important for you to make sure that paragraphs are quite understandable in nature so that you will be able to figure out the answers. But the fact is कि अगर हम punctuation उसमें ना use करें, that might become a bit obscure for you to understand, which is eventually going to result in your low or you can say wrong answering. So this is the reason it is very important when it comes to coherence and cohesion. Similarly, we've got a writing module in which you need to write an essay or a report writing or a letter writing. In that, if you will not use punctuation, definitely it's going to be very difficult for the examiner to understand what is the exact intent you were having at the time of writing the answer. Basically, this is what disrupts the meaning of the letter or the report or the essay that you're writing. So it's really very important for you to make sure कि जो intention है उसको clearly present करो. For that reason, we use connectors as well. Punctuation has a very good combination or a bond you can say with the connectors and the conjunctions. I'll help you out in knowing all of them. Just bear with me. Mistakes can change meaning or make writing confusing. Exactly. This is what I have been telling you since the starting of the session. Crucial for achieving band 7 plus in writing, it shows clarity and control of language and speaking indirectly through pauses. Exactly. So whenever you're reading anything, ठीक है, आप कभी भी कुछ भी पढ़ते हो, so it is really very important कि अगर आपने देखा होगा, one of the highly used punctuation mark is full stop and then a comma. Furthermore, question mark and exclamation mark as well. Sometimes semicolon or hyphen as well. So basically, these are the symbols or a kind of signs that are used for a clear communication. Now, here are some of the punctuation marks which are commonly used and that are the part of the communication, that are the part of punctuation series. Comma, of full stop first of all, comma, semicolon, colon, question mark, exclamation marks used rarely and formally, apostrophe, quotation mark, hyphen, dash and brackets. So these are some of the punctuation marks which are used. अब बात करते हैं कि what is the
what are some of the punctuation mark जो हम usually use करते हैं और जो हम बहुत commonly use करते हैं. We've got full stop or period. We've got comma. We have got question mark. We've got exclamation mark. Of course, a bracket in order to denote something specifically. Hyphen at times. Apostrophe, exactly. And yes, these are some of the punctuation mark we commonly use or we often use, right? Talking further. सबसे पहले बात करते हैं full stop, which is again one of the most essential, very essential punctuation mark that we use. First of all, talking about full stop. What exactly is full stop? I mean, like, why do we use it? Starting off with this, ending a statement. जब भी आप कोई भी चीज पढ़ते हो, ठीक है, तो वहां पे चाहे मैं हिंदी लैंग्वेज की बात करूं या इंग्लिश की बात करूं, हम वहां पे वी ऑफन यूज इट, ठीक है. और यू कैन से लाइक वेन एवर वी आर एंडिंग अ स्टेटमेंट, जब भी हमें ऐसा दिखाना होता है कि हमारा स्टेटमेंट खत्म हो रहा है, ठीक है, हमारा स्टेटमेंट एंड हो रहा है, या नाउ वी आर नॉट गोइंग टू मेंशन एनीथिंग आफ्टर दिस, सो वहां पे हम क्या लगाते हैं? फुल स्टॉप. ठीक है, इट मीन्स हमारी जो कॉन्वर्जेशन है, हमारी जो स्टेटमेंट है, हमारा जो सेंटेंस है, हमारा जो इंटेंट है, वो वहां पे खत्म हो जाता है. फॉर एग्जाम्पल, the graph shows a sharp rise in sales and that's all. This is where you're going to end your answer. इसके लिए हमने यहाँ पे full stop add on करा है. Talking about it further, कॉमा की बात करते हैं जब हमें सेपरेट करना होता है किसको? आइटम्स, क्लॉजेस और आइडियाज को. कैसे? अब कॉमा इज अ रियली बिग कंसेप्ट. When I talk about comma, देखो फुल स्टॉप का कोई वो नहीं है. I mean, फुल स्टॉप के साथ कोई ग्रामेटिकल रूल अप्लाई नहीं करता है. हाँ, एक ग्रामेटिकल रूल अप्लाई करता है कि जब भी आप एंड ऑफ द स्टेटमेंट यानी फुल स्टॉप ऐड करते हो, फुल स्टॉप के बाद से आप जो भी लिखोगे वो स्टार्ट करोगे आप कैपिटल लेटर से. ठीक है, ये तो सबको पता होगा. ठीक है, बट वेन इट कम्स टू कॉमा, कॉमा के साथ बहुत सारे ग्रामेटिकल रूल्स, रेगुलेशन सब लगते हैं. ठीक है, इसका ध्यान देना होता है बस. टॉकिंग अबाउट अवॉइड कॉमा स्प्लाइसेस. ऑल्दो सेल्स ड्रॉप्ड, हालांकि सेल्स गिर गए, प्रॉफिट्स रिमेन स्टेबल, प्रॉफिट्स जो थे वो स्टेबल रहे. सो ऑल्दो द सेल्स ड्रॉप्ड, कॉमा. अब आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि आई नो अ लॉट ऑफ पीपल माइट बी अवेयर ऑफ इट, बट मैंने देखा है बहुत सारे लोगों को गलती करते हुए यहाँ पे कि वो कॉमा के बाद भी कैपिटल लेटर से शुरू करते. क्यों? दैट इज क्लियरली रिटन. जब भी आप कॉमा यूज करते हो, कॉमा के बाद कैपिटल लेटर नहीं आता है. द ओनली कैपिटल लेटर जो पंक्चुएशन मार्क के बाद आता है, दैट इज फुल स्टॉप. ठीक है, टॉकिंग अबाउट फर्दर, semicolon and colon. What exactly it is? Semicolon collects two related independent clause. And prices increase, demand remains constant. Talking about independent clauses. So independent clauses आपको पता होगा, मैंने types of sentences में आपको already explain करा हुआ है. इंडिपेंडेंट क्लॉजेस वो क्लॉजेस होते हैं जिनको किसी भी सपोर्ट की जरूरत नहीं होती है इन ऑर्डर टू कंप्लीट द सेंटेंस. अब हम बात करते हैं सेमीकोलन की. तो सेमीकोलन तो रिलेटेड इंडिपेंडेंट क्लॉज को कनेक्ट करने के काम में आता है. इंडिपेंडेंट क्लॉज यानी कंप्लीट स्टेटमेंट्स. दो कंप्लीट स्टेटमेंट को जब हम कनेक्ट करते हैं तो उनके बीच में हमें सेमीकोलन का यूज पड़ता है. कोलन इंट्रोड्यूसेस अ लिस्ट और एक्सप्लेनेशन. देयर आर थ्री मेन कॉजेस: पोल्यूशन, ओवरपॉपुलेशन एंड वेस्ट. सो बेसिकली कोलन आप यूजुअली यूज करते हो जब आप लिस्ट प्रोवाइड करते हो सर्टेन चीज की, सर्टेन सिमिलर चीजों की, तो वहां पे आप कोलन यूज करते हो. कोलन इट्स लाइक टू डॉट्स एंड देन यू फर्दर कैरी ऑन विद द एंटायर लिस्ट. सो दिस इज हाउ इट वर्क्स. अब हम आगे बात करते हैं. सो दिस इज एंटायरली अबाउट अ फुल स्टॉप, कॉमा, कोलन, सेमीकोलन. Talking about further, let's talk about apostrophe. Apostrophe, contraction in speaking. It's, don't, I have. Apostrophe is a punctuation mark जो usually use होता है to show the abbreviated forms of the full form. Abbreviation मतलब short forms. ठीक है,
ये बेसिकली शॉर्ट फॉर्म्स को शॉर्ट फॉर्म्स कह लो या कॉन्ट्रैक्शंस कह लो, जैसे लिखा हुआ है शॉर्ट फॉर्म्स कह लो या कॉन्ट्रैक्शंस कह लो, उसको शो करने के लिए हम यूज करते हैं किसका, अपोस्ट्रोफी का, ठीक है। पोजेशन, स्टूडेंट्स ऐसे वर्सेस स्टूडेंट्स ऐसे। अब यहां पे बेसिकली क्या है, पोजेशन मतलब द ओनरशिप दे आर टॉकिंग अबाउट, ठीक है। हाइफन नहीं, होल्ड ऑन, इट्स डोंट आई हैव, तो इट्स का मतलब हो जाता है इट इज, डोंट हो गया आपका डू नॉट, आई हैव का मतलब हो गया आई हैव। ये होते हैं फुल फॉर्म्स। इन्हीं को शॉर्ट फॉर्म में जब हम प्रोनाउंस करते हैं या जब हम लिखते हैं, उन्हीं को एब्रिविएट करने के लिए हम अपोस्ट्रोफी का यूज करते हैं, ठीक है। टॉकिंग अबाउट फर्दर, हाइफन एंड डैश। Hyphen is a small dash and dash is a quite मतलब like a good amount of length. Hyphen join compound words, ठीक है। An example, well written 25. Well written 25. Hyphen joins two compound words together and dash adds extra info or emphasis. Band 7. Every test taker's dream. So basically, band 7 is a band score or a heading that is a dream of every test taker. So dash signifies an add-on information or extra information or an emphasis on a particular statement. Clear? Talking about it further, let's understand comma thoda अच्छे से, ठीक है? Because I know comma is something which is a bit of a complicated thing when it comes to your IELTS examination, क्योंकि हम बाकी तो ज़्यादा यूज़ करते नहीं है, comma सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं. So it's important for you to make sure to understand how it works. The comma is one of the most commonly used and misused punctuation marks in English. Exactly. In IELTS writing, correct use of comma shows clarity, organization, and grammatical control. To separate item in list, the very first thing that a comma does, it separates items in the list. It separates what? Items in the list. जैसे हम बोलते हैं ना, I would like to have a bread, butter, tea and coffee. तो जब आप ब्रेड बटर टी लिखोगे तो ब्रेड के बाद कॉमा, बटर के बाद कॉमा, टी एंड देन यू आर गोइंग टू ऐड द लास्ट आइटम जिसके पहले आप कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन लगाते हो, ठीक है। यूज कॉमा टू सेपरेट 3 or more items in a series. That's what I said. So basically what you do is कॉमा आप यूज करते हो, सबसे पहला यूसेज होता है कि जब आप 3 से 4 चीजों को अलग अलग डिवाइड करते हो या सेपरेट करते हो, फॉर दैट रीजन यू आर गोइंग टू यूज कॉमा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल देख लो आप, the graph highlights changes in the production of rice, wheat and corn between 2000 and 2020. IELTS tip, avoid using a comma before and Oxford comma unless necessary for clarity. अच्छा ये क्या होता है? अभी कुछ देर में, just allow me some time, I'll explain you everything. अब आप बोलोगे मैम and के पहले तो कॉमा नहीं लगता है, then why is it written that and के पहले कॉमा अवॉइड करना है या नहीं लगाना है या लगा सकते हैं, why is it? कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के पहले आप कॉमा लगाते हो एंड इट इज अ रूल इन इंग्लिश ग्रामर, बट नॉट दैट काइंड ऑफ स्ट्रिक्ट रूल. रूल है, लगा सकते हो, दैट्स अ ग्रामेटिकली करेक्ट थिंग, बट नहीं लगाना इज अगेन एन ऑप्शन, ठीक है। आई विल एक्सप्लेन यू एवरीथिंग, जस्ट बेयर विद मी. नाउ आफ्टर इंट्रोडक्टरी फ्रेजेस और क्लॉजेस, फॉर एग्जांपल, यूज अ कॉमा आफ्टर एन इंट्रोडक्टरी फ्रेज टू शो अ पॉज. जब भी आपको एक पॉज शो करना होता है, जब भी आपको एक हल्का सा स्टॉप शो करना होता है, फॉर एग्जाम्पल ये बेसिकली आप मेजॉरिटी ऑफ द टाइम आप ये किसमें देखोगे, ये आप देखोगे रीडिंग के टाइम पे, कि जब आप रीड करते हो तो आपको समझाया गया है कि जब आप फुल स्टॉप रीड करोगे तो फुल स्टॉप में एक थोड़ा ज़्यादा लंबा पॉज होगा, बट जब आप कॉमा रीड करते हो तो कॉमा अगर आ जाता है बीच में वाइल रीडिंग तो यू टेक अ लिटिल बिट ऑफ छोटा वाला पॉज यू टेक, ठीक है। For example, in conclusion, it is evident. In conclusion, it is evident that renewable energy will play a crucial role in the future. Despite the decline in the population, employment level remains stable. These are especially useful in essay introduction and conclusion.
Now, this kind of comma and full stop uses brings clarity and the intended purpose that the writer has at the time writer had at the time of writing the particular statement or a particular paragraph. Talking about next thing, two separate independent clause with coordinating conjunction. This is what I told you. You use comma before fan boys. अभी मैंने बताया था कि हम and के पहले भी comma use कर सकते हैं, but when? Fanboys is basically coordinating conjunction. जब मैंने conjunction पढ़ाया था, मैंने रिवाइज भी कराया था, मैंने वहां पे भी बताया था what exactly a fanboys is. आपको पता होना चाहिए because these are the major topics जो आपको IELTS में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं, या आपको एक नॉर्मल इंग्लिश कॉन्वर्जेशन में या एक नॉर्मल इंग्लिश ऐसे राइटिंग में भी बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं. So, for and or but or yet so, when they join two independent clauses, again independent clauses are the clauses which do not need the support of any other additional sentence. The number of tourists increased, but the local economy did not benefit significantly. Many people support the idea, yet others argue it could be harmful. Now, why do we do it? I mean, like, why do we add a comma before and, but, nor, for, so, yet? इसलिए because that is known as Oxford punctuation. ठीक है, अभी मैंने आपको बताया ऑक्सफोर्ड कॉमा अनलेस नेसेसरी फॉर क्लैरिटी. बेसिकली आप एंड बट के आगे भी कॉमा यूज कर सकते हो, जिसको हम ऑक्सफोर्ड कॉमा बोलते हैं, बट वो इंपॉर्टेंट नहीं होता है. I mean, it is not grammatically aligning to any of the strict rules. जैसे फुल स्टॉप लगाना इंपॉर्टेंट होता है, कॉमा लगाना इंपॉर्टेंट होता है, उसी तरह ऑक्सफोर्ड कॉमा इज नॉट इंपॉर्टेंट. वो इंपॉर्टेंट नहीं होता है. अगर आप उसको नहीं भी लगाओगे, स्टिल योर सेंटेंस वुड बी ग्रामेटिकली करेक्ट. अगर आप लगा दोगे तब भी योर सेंटेंस इज गोइंग टू बी ग्रामेटिकली correct. For that reason, it is strictly not that or very much, considerable. But yes, अगर आप use करना चाहते हो, if you have that kind of, grammatical concept clear and everything, you can use it, of course. ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं. Let's talk about for non-essential parenthetical information. Use commas to set off extra information that add details but is not essential to the main idea. For example, the internet, a vital tool in education, has revolutionized the way students learn. The bar chart, which illustrates employment rates, shows significant differences among sectors. So you can see there were multiple commas with respect to each and every statement. But what is very important for you to know is that all these information may not be that vital or that important for you to cater to. For that reason, there have been used multiple commas, but at the same time आप use नहीं भी करोगे या आप वो information mention करो जो बहुत ज़्यादा essential नहीं है. In that case, you can use comma also whenever you are adding an extra information to it. ठीक है, चलो. Now, with adjectives, use comma between adjectives that separately describes a noun. For example, a city experienced a long, harsh winter. Don't use commas if the adjectives build on each other. She wore a bright red dress. No comma needed. A city experienced a long, harsh winter. But no comma is needed when the adjectives build on each other. She wore a bright. Already she is wearing a bright. Bright is a term, bright is an adjective that is emphasizing noun, which is dress. And at the same time, we have red over here that is again emphasizing the dress or the color of the dress. With conditional or complex sentences, if the dependent clause comma comes first, use a comma before the main clause. If educational becomes more accessible, society will benefit. No comma if the main cause comes first. Society will benefit if the education becomes more accessible. So basically, it's all about the work and play of how your phrases are going to be, how you are going to layer the adjectives, how you're going to layer it in the sentence. Again, the comma depends on that. Common mistake that students usually do in comma and IELTS examination. Comma splice. Many students prefer to study online. It is more flexible. Now, this is a wrong sentence. Many students prefer to study online because it is more flexible. Or online, it is more flexible. Why? Because here we are having two independent clauses and दो independent clauses को जब हम correct करते हैं तो उनके बीच में comma नहीं semicolon आता है.
Missing comma after introductory phase. To conclude, again, is an opening statement or an introductory phase. It is essential to address the climate change. To conclude, it is essential to address the climate change. The graph shows changes in data. The graph shows changes in data, no comma is required. Overusing of comma is there. ठीक है? Common punctuation error, क्या करते हो? Missing full stop, run-on sentences, nahi. They can be read in a wrong way and can be interpreted in a wrong way, which you might not be intending to present. So just take care of it. Excessive commas or no comma, exactly. I have seen students like either they are going to use excessive commas or they are going to use no commas. Both of the scenario are going to be very, for both of the scenario you will be penalized for that, right? Apostrophe misuse. It's लिख रहे हैं, it लिख रहे हैं. What exactly you're trying to write? If you're not going to put an apostrophe, definitely it's not going to make any sense to the examiner to correct it or to consider it as a grammatically correct sentence. Overusing exclamation mark without any emotion, without any exclamatory phrase, you're using exclamation mark. Wrong use of quotation mark. So just be very sure when to use a quotation mark, when not to use a quotation mark. So it's important. Good punctuation, higher bands in writings, supports fluency and controls speaking. It's not just grammar, it's strategy. Of course, it's a strategy on how you deal with the particular grammatical topic or how you deal with the particular grammatical rule. Okay. And yes, that's all. Thank you so much, everyone. Thank you so much for being here. It has been a wonderful session with you, and I hope this is going to help you out. And please let me know if you need any other additional session or any other doubts. Please comment it down below in the comment section, and I'll be there to help you out. Bye bye. Take care.